So in the previous class, we have already derived cost function for logistic regression. Okay, we have seen what's the maths behind it. Okay, and from the starting of logistic regression, that means we did talked about the probability P, and from that P till your cost function, and then how to calculate the weight and the bias for your training. Okay, that also we have seen, that is your partial differentiation. All right, so once your model has been done, then obviously we need to evaluate our model. Okay, so we are going to have the review of our logistic regression today, and also I will check out for the code, that is the implementation of logistic regression on Python. Fine. So if I do talk about this logistic regression model evaluation, R2 score. Okay, we did study this R2 score in linear regression. That means we need to fit the points over the line. It's called as an R2 score. That is also called as coefficient of determination. It's measure how your model is working. If your points are over the line, then we are going to have a good R2 score. And if the points are away from the line, then we are going to have a less R2 score. So R2 score lies between 0 and 1, 0 and 1. So towards 1 it is good, and towards 0 is poor. And we also get the R2 score negatives. That means your model is totally worst. Okay, it's not at all working good. It's that means no chance of using that model. Okay, so it's a coefficient of determination that measure how well the model has been working, and it explain that how we achieve the dependencies. What means dependent variable, independent variable, and that relationship. That whether we achieve that relationship or not, that has been calculated with the help of R square. Okay, or R2 score, whatever you want to say, you can. So R square is calculated for logistic regression in different way from linear regression. Okay, in linear regression, R square measures the proportion of variance in the dependent variable by the independent variable. However, in case of logistic regression, the dependent variable is binary, 0 and 1. So R square cannot be directly calculated in the same way. There's a different approach for calculation of R square. In case of linear regression, we did seen that also mentioned what is a of variance. That means how your points are distributed, and how they are going to fit over a line. That means fitting the points over a line is what we did calculated in case of linear regression. However, in case of your logistic regression, the things are something different. They are saying that in case of logistic regression, the dependent variable is binary. Dependent variable, no, that is y. Okay, target is binary in nature. So for that reason, our R2 score calculation is different. So for that, they are using one approach that is called as McFadden approach. And this McFadden, the formula for the McFadden R square is 1 minus log likelihood of the full model divided by log likelihood of the null model. Okay, full model and the null model. So what is this full and the null model? See, the log likelihood represents how well the model predicts and observed the data. So the null model is the model that only an intercept, that means no independent variables are present. That's called as a null model. No independent variables are there. And in case of full model, we are going to include all the independent variable. The point is clear. Okay, we are going to analyze our model on the basis of R2. Okay, in case of linear regression, this R2 means the best fit line. Okay, however, in case of logistic regression, we don't have line. We are not talking about this thing. We are having a sigmoid function. That's what we called as a logistic. So how to evaluate this model? What is the R2 value for this logistic regression model? They said to compute this particular thing, we are going to use a formula that is called as McFadden R square, and that is equal to 1 minus log likelihood. You very well know about this thing, likelihood. Okay, yesterday class,
hx to the power y plus 1 minus hx to the power 1 minus y. This is likelihood. Then you multiply. Okay, hx to the power y multiply by 1 minus hx to the power 1 minus y. And when you take a log of it, then it will be called as a log likelihood. So we have seen this thing, log likelihood. So log likelihood of the full model divided by log likelihood of the null model. In case of null model, they are saying that there is no independent variable. No independent variable available. In full model, I am having all the independent variables. So here it is all and here it is none. So it's called as a null model and it is called as a full model. So 1 minus this thing is going to give you r square. For the logistic regression, again the same thing. It ranges from 0 to 1. Higher the value indicate the better fit. Higher the value of r square, it's going to give you that your model is the best one to use. Okay, so this is one of the way to evaluate logistic regression, that is r square. So remember, in an interview it may be asked whether r square is same for your linear regression, logistic regression. See, we have seen that both belongs to linear model. Both are linear, belongs to linear model, but we have seen many differences between these two, linear regression and logistic regression. Where linear regression failed, logistic regression came into the picture and it became a classifier. It predicted the probability, separate them into classes, create a decision boundary. That's what happens in logistic regression. Also, we don't use the same cost function as that of the linear regression cost function. Here, the cost function is different for the logistic regression. Yesterday, we calculated the cost function. Okay, and now for evaluation also they are saying, because it's a classification stuff. Okay, so for classification the things will change. So they are saying r square. So r square is been calculated by using McFadden r square. Okay, and here is the formula for calculation of r square related to the logistic regression. Log likelihood of the full model, where we are going to have all the features, all the independent variable, and null model when I'm going to have only an intercept, only intercept value. There are no other features available, only intercept. Now y equal to, you say no, y equal to beta naught plus beta 1 x. So we are not going to have this beta 1 x and beta 2 and all this, and we don't, I am only available with the intercept, that's it. Okay, so your sigmoid function will be 1 upon 1 plus e ki power minus beta naught, that's it. That will be called as a null model. And if you are going to include other features also, then it will be full model. This is how we calculate the r square. There is one more criteria for evaluating a model in logistic regression, that is archaic information criteria, AIC. Archaic information criteria. I hope you haven't heard this name previously. R2 also for logistic, because for logistic it's a classification. Na? So we do work with the confusion metrics. We do work with the classification report. We calculate F1 score and other precision and the recall. We never talk about R2 and AIC for logistic, but they are available for the evaluation. So AIC is a measure that balances the trade-off between model complexity and the goodness of fit. Okay, how? By creating a model, we may lose some information because no model perfectly represent all the complexities in the data. So complexity, model complexity, that means how well the model understand the data, distribution of the data. That is called as the model complexity. Okay, and goodness of it, if it understand the data, obviously the data will be fitted over the trace whatever your model is doing. So whether it's a line, whether it's a curve, whatever, that's called as a trace. Okay, so the points are available on the trace, so obviously your model is good. So AIC is defined as, so AIC estimates the amount of information lost by the model. Okay, amount of information loss, it's calculated as AIC equal to minus 2 by n multiplied by log likelihood plus 2 into k by n. That is AIC formula, amount of information loss by a model. So n is the number of samples in the training data. How much sample you are taking, X train, Y train, how much you are taking. Okay, so samples. Log likelihood is, you very well know what is log likelihood. Okay, K is the number of parameters in the model. Okay, how many parameters we are using
while creating logistic regression. What are the parameters? Okay, for the logistic regression, we do have now your hyperparameter things and all this stuff. Okay, so how many parameters, your number of parameters used in the model. Okay, and that's it. And you very well know number of your samples. That's it. Log likelihood, number of parameters, and number of sample. That's it. This is how I put for AIC. So lower is the AIC. That means lower is the information loss, the better is the model, and higher is the information loss, worst is the model. Okay. So it penalizes models with more parameters, discouraging the overfit. If the parameters are more, then obviously you're going to have the, if it penalizes models with more parameters, discouraging the overfitting. So if you are having more parameters, so obviously it will going to discourage your model. What it means, parameters, we are again talking parameters, how many parameters we are using. So what does this parameter means in case of data? In case of data, what are the parameters? Is it talking about independent variables, how much we are using in our model for the training? Is that it's talking number of parameters? So number of Yes, samples, so number of samples means, okay, how many are how many row entries, no, number of samples, is that the number of samples? And no, number K are the independent variables. k are the, see that, wait, independent variables, and number of samples, and number of samples means is it a number of rows which are available in your data set? That means we are Yes, using 500 or 1000 or 2000 entries. yes, Okay, so n is your number of samples, okay, number of entries, and k is your number of parameters. Okay, as much as parameters you are using, definitely it will lead to the overfitting. Why? Because the reason is these parameters might be correlated with each other. So obviously it will be overfitted model. Okay, so I'm going to draw what they said. It penalizes models with more parameters. If we are having more parameters which we put in this particular model for the training purpose, there will be penalty. Okay, so it discourage overfitting of the model. Okay, so as much as parameters you are using, and if they are correlated with each other, obviously it will lead to overfitting. So there will be penalty for your overfitted model. So AIC is something which we use for information loss. High information loss, your model is not going to behave good. Okay, and less, that means your model is working good. Here is the formula for AIC. Okay, again, so R2, AIC, these are the evaluation criteria. So they are saying that it's a useful model selection, useful for model selection. That means by fitting different models on the whole data set, comparing their AIC values, we can choose which model has the lowest AIC, that will be the best one. Which is having the lowest information loss, that model is going to be the best model for our use. So this is one of the way to evaluate a model. There are other methods also, and now these methods are very well known to you. These are very well known models: confusion matrix, ROC, AUC curve. So confusion matrix, okay, and we do have an idea about many of the projects and which we do. Confusion matrix are available. Okay, so it's a matrix where you are available with the values true positive, true negative, false positive, false negative. These are the values which are present in the confusion matrix. Okay, so and okay, and there are other performance measures also. That means accuracy, precision, recall, specificity. Okay, specificity, these are also the metrics, that means parameters which are available to evaluate a model. Okay, so we are going to see all of them ahead. Okay, in this notes I'm going to explain. So the thing is, we are going to finish up the concepts related to it. What is true positive, what is all these things, and there should not be any kind of confusion ahead. ROCAUC curve, what is this? Receiver operating characteristics and your what, area under the curve. ROC means receiver operating characteristics. AUC means area under the curve. What does they mean? See, receiver operating characteristic curve is a graphical representation of the performance of a binary classifier. See, especially in case of logistic regression, it's a binary classifier. It's a binary classifier. Okay, for and I already told, every model, every classification model says that I am good with the binary classification. See, it
This line suits well with the logistic regression. If you are having binary classification, use this thing. Others also, but include this thing. But if you are having multi classification, you can use it. It will not say no, that kindly don't use me. It will not say no, you can use it. But the cases, decision tree, random forest, they are much more fitted when you are having multi classification, multi class classification. Okay, so if you are talking about binary classification, then this receiver operating characteristic curve is made. It's a graphical representation to give you the performance, how this binary classification has been working on, and on the basis of threshold values. Okay, it's classifying, you very well know it's going to give me the probability. What does logistic regression is going to give me? It's going to give the probability. Then on the basis of threshold value, I am going to separate it, that this particular data point belongs to 1 and this particular data point belongs to 0. Okay, because it do calculate the probabilities. Okay, and then according to the threshold we classify, we make a decision boundary. So according to threshold there will be decision boundary, it will classify the points. So it plots true positive rate against the false positive rate. What is TPR and the FPR? There it's saying that receiver character operating characteristics plot TPR and FPR. Okay, as the threshold changes. So what is this? I will teach you ahead. Area under the curve summarizes the classifier performance over all the threshold. Higher AOC, higher is the area under the curve, your model performance is best. So what these terms are, we talk here. First, let me say about the confusion matrix. To evaluate the model performance, classification model, especially where the true values of the target variable are known, that means obviously it's a supervised learning. No? Logistic regression is also supervised. Target is known. Okay, so we need to check that our model prediction for the different classes is good or not. Okay, so how to do this? How to prepare a matrix? We say that okay, TP, okay, true positive, false negative, false positive, true negative, something like this we can make. Okay, what is true positive? You very well know, sir. The model correctly predicts a positive class when the true label is also positive. So when actually the output is positive and your model has also predicted the same, that means y equal to y dash. Okay, true positive. What they're saying predicts a positive class, that is class 1, when the true label is also positive. When the label is also positive. That means if your output is 1, your model has predicted is 1, fine, good, true positive. What is true negative? True negative means where the model correctly predicts the negative class. True negative. True negative. Remember, because confusion is there. And we are here, here model confusion we are talking, but we people are also get confused with these terms. True negatives. What is true negatives? That means where the model correctly predicts a negative class. Model correctly predicts a negative. Your negative class is 0. Your model also predicted as 0 when the true label is also negative. Now, sir, ये तो क्या बोल रहे हैं? True negative. सर पहले वी डू कि ऐसा बोला दैट इन द प्रीवियस कभी ऐसा हुआ होगा डिस्कशन में भी. So true negative means your value was something else and it negatively it predicts something else. True negative, that means values were true but model predicted as negative. शायद ऐसा समझे हम. We did understood something like that previously. और यहाँ क्या बोल रहा है वो? True negatives. That means this is the case where model correctly predicted the negative class. That if it is 0, then model gave it as a 0. So we are having classes now. Class A and class B. So true positive, true negative. True positive, that means positively correct, calculated value. How much? And negative means negatively corrected values. Then what is false positive? That where the model incorrectly predicts the positive class. This is false positive. That means it should have to be 1, but your model predicted as 0. That is false positive.
False positive, no, false, no. So your positive value was 1, but our model predicted it as false, so it's shown 0. That is called as false product, false positive. Then what will be false negative? That means your output is should have to be 0, but your model, okay, false negative, no. So your that means it should be in negative class when a true label is positive 1. That means it incorrectly predicts the negative class 0 when the true label is positive class 1. Now what does this mean? What does it mean? False negative means it should be 0, your model predicted as 1, or something else. Something else it is saying. Confusion should not be there. Yes, please say. False positive, it's told that model incorrectly predict positive class 1 when the true label is negative 0. क्या हो गया? What they told? That your label was 0, it predicted 1. That's what it is saying. That incorrectly predicts the positive class 1 when the true label is 0. What does it mean? That your actual value was 0 and it predicted as 1. That's what it is saying. Please tell me. The Huh? actual was 1 and then it predicted 0. Okay, actual was 1 and predicted 0. Okay. This is the case where the model incorrectly predicts the positive class, incorrectly predict the positive class when the true label is negative. Tell me, I think it's a Yes, fair. sir. It is negative, Hmm. but model is falsely predicting is positive. Okay, it is negative, but model is falsely predicting positive. That means Yeah, that's why it the is false positive. that means the value is 0, but the model Zero. predicted as 1. Yes, sir. Okay, so it That incorrectly means that predicts. that is written like incorrectly predicting is positive. So that's what the name said. False positive. False. Is it? Is it something like that? False positive. And false negative Yes. means? False negative means False negative means it is incorrectly predicting negative. incorrectly. Mhm. Class, like it is related to class 1, but incorrectly it is predicting class 0. Okay, incorrectly it is giving class 0. Okay, so your output should be class 1, should have to be 1, but Yes. it gave you 0. And in the upper Yes. above case, your output should have to be 0, but it gave 1. Okay, तो ये तो हमारे लिए ही confusion, मतलब I think the other people also should have to take a note of it, because it's creating confusion. Matrix itself is creating confusion. Okay, तो about terms, हाँ, someone has given certain link कि यहाँ से what are the confusion matrix, something like that. Sir, uh, It gave that mapping of one image. हाँ, I was not able to attach here that image, okay, so I thought just put it up that. I okay, mean, fine, yeah. fine, okay. So यहाँ तो मुझे I need to have a discussion with you all. Okay, I need to have a discussion with you all. वो जो है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Okay, क्योंकि that's why I put na, today we need to clear this concept, because classification we are going to use every time this will come as an evaluation. Okay, so what we are going to do ahead? Okay, so mapping. Okay, let me put it here. What the link came about the mapping. Here it is, the mapping part. Okay, so TP, so true positive, false negative, true negative. That's what they used here in case of your confusion matrix. Okay, and what we were studying here, what is it? And there is one more thing. Let me copy one more image and put it here, and we can have a discussion over it also. Okay, let me put it here. One more image, and we can have a discussion over both of them. Okay, and according to the definitions also which we studied, no, the things will become clear. Okay, so Even one more image is there where they have shown the cat. okay,
down to that same thing. Okay, okay, ठीक है. So here I put two images which are available. Okay, तो उन्होंने ऐसे करके, अच्छा इसी इमेज में अहेड है ना, उन्होंने क्या करा, चेंज कर दिया. ये एक्चुअल ऊपर पहले यहाँ एक्चुअल था एंड देन प्रिडिक्टेड वाज देयर एंड देन लेटर ऑन उन्होंने फिर चेंज कर दिया. एनीवेज कोई बात नहीं, हम इसको वैसे देख लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैल्यूज हैं, तो एक्चुअल वैल्यूज आई एम हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन. सो पॉजिटिव नेगेटिव, आइदर आई विल से 1 और 0 ऐसा बोला. सिमिलरली प्रिडिक्टेड वैल्यूज के लिए भी वी कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी प्रिडिक्शन हो गया. तो इफ योर प्रिडिक्शन, दैट मीन्स ये पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि योर एक्चुअल वाज आल्सो 1, जो प्रिडिक्टेड वाज आल्सो 1, तो ट्रू पॉजिटिव हो गया. निगेटिव देन यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव के बगल में ही इन्होंने फॉल्स पॉजिटिव कर दिया. फॉल्स पॉजिटिव व्हाट डज मीन कि आपका योर वैल्यूज वर नेगेटिव, योर एक्चुअल वैल्यूज वर 0. ये देखिए, योर एक्चुअल वैल्यूज वर 0 बट इसने उसको क्या बोल दिया, 1. तो ये फॉल्स पॉजिटिव है. दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव है. यानी कि हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फिर, तो यहां तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है फिर तो डेफिनेशन में. देर इज सम मिस्टेक इन द डेफिनेशन और नॉट. फॉल्स पॉजिटिव नहीं, नहीं है, कोई कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर भी. ये तो शायद वी वी आर सेइंग ना कि योर वैल्यू इन केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव इट शुड हैव टू बी 0 होना चाहिए था, बट उसने प्रिडिक्शन क्या करा, 1 का करा. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग ना. सेम, हम यही वी डिड स्टडी दिस थिंग ओनली. तो ये फॉल्स नेगेटिव है. ओके सॉरी, ये फॉल्स पॉजिटिव है. फॉल्स पॉजिटिव एक जगह यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, कई जगह मैट्रिक्स चेंज भी हुआ है. ओके ऐसा करा, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, ये ऐसी मैट्रिक्स बनाई है एक जगह भी. एंड हियर यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा ये भी बन सकती है जब मैं इसमें इंटरचेंजेस भी कर सकता हूँ, यदि एक्चुअल पॉजिटिव एक्चुअल नेगेटिव समथिंग लाइक दैट, यदि आप चेंजेस करें तो हो जाएगा. एनीवेज हम तो इसको देख लेते हैं. तो फॉल्स पॉजिटिव, तो फॉल्स पॉजिटिव मीन्स योर वैल्यूज शुड हैव टू बी 0 बट प्रिडिक्शन पर तो 1 आया है, इट गेव द प्रिडिक्शन एज 1. ठीक है. व्हाट इज फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव मीन्स कि योर वैल्यूज 0 थी एक्चुअल, ओके बट इट गेव 1. नहीं नहीं नहीं, योर एक्चुअल वैल्यूज और 1, हाँ 1 थी बट इट गेव Yes, sir. गिव योर वैल्यू एज 0, ये आया है फॉल्स नेगेटिव. Yeah. और ट्रू नेगेटिव का क्या है, ट्रू नेगेटिव मीन्स योर वैल्यूज वर 0, ओके योर एक्चुअल वैल्यूज आर आल्सो 0 एंड यू आर आल्सो गेटिंग द 0. बस ये डायग्राम इतना ही, क्योंकि अब आगे फिर कंफ्यूजन तुम्हें भी हो जाएंगे, यू गाइस विल आल्सो कंफ्यूज. तो कैसे समझ लिया, बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर. इफ यू आर अवेलेबल विद अ बाइनरी आउटपुट, बाइनरी है आपका काम, ओके बाइनरी थिंग्स, तो इतना जमा लेना बस. बाइनरी मीन्स ये मेरा 1 है, ये मेरा 0 है, दिस इज माई 1 एंड दिस इज माई 0, बस ऐसा. तो ये 1 1 इफ इट इज कमिंग, 1 1 इट इज कमिंग, दैट मीन्स योर मॉडल, ये यहाँ रखना प्रिडिक्शन और यहाँ रखना एक्चुअल. ठीक है, बार बार अपना नहीं होना चाहिए, अपने को भी डाउट्स नहीं होना चाहिए. दिस इज योर प्रिडिक्शंस. So if your prediction is also 1, your actual is also 1, so it is true positive. Okay, because I am saying 1 is positive, 0 is negative. ठीक है. Now, if your actual is 0 and your model give it as 1, so क्या क्या हो गया यहाँ पे, what happened? तो ये क्या हो गया, इट्स गिविंग फॉल्स पॉजिटिव. अच्छा फॉल्स पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है. फॉल्स मतलब आपने इसको गलत 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 पॉजिटिव बोल दिया, रॉन्ग पॉजिटिव, यू टोल्ड इट एज इट्स अ रॉन्ग पॉजिटिव. ओके तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया. तो इट्स क्वाइट क्लियर, इट शुड हैव टू बी नेगेटिव. 0 means negative, but it's giving 1 as a prediction. That's why we told it as false positive. What happens in this particular case? तो ये false negative हो जाएगा, quite easy, क्योंकि इट शुड हैव टू बी पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव हुआ नहीं, इसने क्या कर दिया, 0 दे दिया प्रिडिक्शन में, तो ये फॉल्स नेगेटिव है बिकॉज इट्स गिविंग नेगेटिव रिजल्ट. सो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट इट इज गिविंग. और ये क्या है, 0 एंड 0 बोथ आर 0 0, सो इट इज ट्रू नेगेटिव. It should be true negative. Now ask me any question if you are having any doubt, please let me know.
सर इसमें एक कन्वेंशन हम लोग ले सकते हैं, सेकंड टर्म हम लोग प्रेडिक्शन वाला ले सकते हैं, तो इजी हो जाएगा ये हैंडल करना। विच जैसे फॉल्स नेगेटिव है, हाँ। फॉल्स नेगेटिव है तो नेगेटिव इज फॉर प्रेडिक्शन, जो सेकंड टर्म है हमारा हम्म वो है प्रेडिक्शन के लिए, तो नेगेटिव इज फॉर प्रेडिक्शन, तो नेगेटिव है जीरो है, हम्म और जीरो है वो फॉल्स है, दैट मीन्स ट्रू एक्चुअल वाला वन है, हम्म ऐसा। फिर सेकंड में जैसे ट्रू फॉल्स पॉजिटिव है, हम्म। तो पॉजिटिव है हमारा वन, दैट इज प्रेडिक्टिंग एज वन। हाँ, तो वो ये बोल रहे हैं ना, फॉल्स पॉजिटिव मीन्स ये सब, ये प्रिडिक्शन, इट प्रिडिक्टेड हाँ, पॉजिटिव ओनली ना, इट प्रिडिक्टेड पॉजिटिव बट एक्चुअली इट इज जीरो, दैट्स व्हाई वी। एक्चुअली वो फॉल्स है, हाँ बट प्रेडिक्ट कर रहा है वन। हाँ, वन। तो ये सेकंड टर्म प्रेडिक्शन को दिखा रहा है और फर्स्ट टर्म एक्चुअल को दिखा रहा है, हाँ ऐसा। हाँ हाँ, फर्स्ट टर्म इज टेलिंग यू व्हाट, दैट इज, एक्चुअल। हाँ, एक्चुअल। तो ये है ट्रू, हाँ, ये है ट्रू, और ये है फॉल्स, ठीक है। और ये क्या है, प्रिडिक्शन है। तो ये भी ये क्या है, ये यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये प्रिडिक्शन भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, प्रिडिक्शन शुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव। प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन पॉजिटिव है हाँ बिकॉज पी इज वन, हाँ, पी और एक्चुअल एक्चुअल जीरो है, हाँ, तो वो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया, दैट्स व्हाई। अच्छा, बिल्कुल हाँ, तो सही है। फॉल्स पॉजिटिव। ओके, गुड, वेरी गुड। एंड हियर हियर ये क्या है, फॉल्स है ना, हियर इट इज फॉल्स। फॉल्स नेगेटिव है, तो दैट नेगेटिव मींस, हो गया, अच्छा दैट इज फॉर नेगेटिव, अच्छा प्रेडिक्शन। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये प्रिडिक्शंस के लिए है। और प्रेडिक्शन हो गया, हाँ, और ये यस। फॉल्स एंड ट्रू, व्हाट दिस फॉल्स एंड ट्रू आर, दीज आर फॉर एक्चुअल। फॉर एक्चुअल, ये एक्चुअल के लिए। आप कैसे भी आपको याद रखना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कीप योर मेमोरी ना, यू कैन मेमोराइज। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इफ यू आर नॉट कंफ्यूज, और यू आर नॉट गोइंग टू, मतलब मॉडल विल आल्सो नॉट गेट कंफ्यूज, नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि हाँ क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। तो हमेशा, हर एवरी प्रोजेक्ट, एवरी टाइम ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ओके, सो अभी नहीं होना चाहिए। I think last time, this is the last time we are putting a discussion over 2 x 2 की confusion matrix, क्योंकि दो आउटपुट हैं, 0 and 1। सर एक बार 3x3 का करें क्या? ना 3 का भी कर, 3 वेरिएबल्स के लिए। हाँ 3 वेरिएबल्स के बिलीव करेंगे, तो अपन वो आगे देखेंगे जब डिसीजन ट्री एंड मल्टी क्लासिफिकेशन, जब वहां पर सपोर्ट करता है वो। ओके, ओके, हाँ, ओके सर। वहां पर 3 का भी बनेगा। ओके, 3 का भी बनेगा, 3 x 3 का। ओके, बड़ा उसमें भी अच्छा, इट ऑल्सो रिक्वायर्स द कैलकुलेशन, क्या अभी बोल रहे हैं ना, ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, ये देखिए, ये कैलकुलेशन, हाउ द कैलकुलेशन ऑकर फॉर ट्रू पॉजिटिव। तो ये जो है प्रिसीजन, जैसे कैलकुलेशन को यूज करना है मुझे। तो ट्रू पॉजिटिव में हमने बोला ऐसी कितनी वैल्यूज है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर। तो ट्रू पॉजिटिव में हमने ये तो निकाला हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ योर आउटपुट, इन केस ऑफ योर आउटपुट, फॉर एग्जांपल दिस इज y एंड दिस इज y डैश। Okay, so your output is 1, your predicted is 1, fine. Your output is 1, your predicted is 1. Your output is 0, your prediction is 1। तो भाई ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिसमें एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड आर सेम, तो ये क्या कहला जाएगा, ट्रू पॉजिटिव। तो ये टीपी की वैल्यू हाउ मच, इट इज 2, द वैल्यू ऑफ टीपी इज 2। ओके, और फिर क्या हो गया, देन 0 and 1, 0 and 1, तो ये 0 था, योर एक्चुअल वाज 0 बट इट गेव 1, तो ये क्या होगा, योर वैल्यू वाज 0 बट इट गेव 1, तो प्रिडिक्टेड कितना आ गया। फॉल्स पॉजिटिव। हाँ, तो 0 and 1 का केस क्या था, यू हैव सीन अबाउ कि ये 0 है, ये रहा 0, ये रहा 0 है एक्चुअल, एंड इट गेव 1, तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। तो नाउ योर ऐसे कितनी वैल्यू आई हैं, हाउ मेनी दीज वैल्यूज आर देयर, 1 वैल्यू। तो फॉल्स पॉजिटिव कितना हो गया, एफ पी इक्वल टू 1। सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू एक्सटेंड योर डेटा सेट, सो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट, ये आपका हो जाएगा ऐसी। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये नंबर ही डालता है यहाँ पर, हाउ मेनी ऑफ सच वैल्यूज आर देयर प्रेजेंट। ओके, तो वेयर योर मॉडल कंफ्यूज ओवर 0 and 1, तो इनकी नंबरिंग ही करता है वो। अब वी आर गोइंग टू यूज दीज नंबर्स इन फर्दर कैलकुलेशंस। ओके, तो काउंटिंग ये तो चल रही है, तो आप बोलो सर 3 x 3 का भी यदि हो जाए, ओके, तो उसमें भी वी आर गोइंग टू हैव सच काउंटिंग ओनली। तो यहाँ 0 and 1 है, देयर विल बी वन मोर क्लास, फॉर एग्जाम्पल -1 आ गया। ओके, तो -1, 0 and 1, तो ऐसा करके यदि आप बनाओगे, इफ यू आर गोइंग टू मेक क्रिएट 3 x 3, वहां भी यही बनेगा, ये 3 x 3 का बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ आप ले लो -1, 0, 1, और यहाँ भी आपको ऐसे लेना पड़ेगा 1। ओके, -1, 0, 1 ऐसा ले लेते हैं। तो -1 ट्रू पॉजिटिव हो गया, है ना। और रेस्ट वाले केसेस में क्या होने वाला है,
रेस्ट वाले केसेस में क्या होगा? व्हाट शुड Sir, बी द हाँ, यस, यस टेल। sir, horizontal line will show the false positive, and the like vertical line will show the false negative, and the rest four here will show the true negative thing. ओके, तो यहाँ व्हाट शुड आई पुट हियर? व्हाट शुड आई पुट हियर इन दिस? False positive. ओके, फॉल्स पॉजिटिव, व्हाट And हियर? this one is also हियर false हियर positive. ओके, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। और चलो इधर व्हाट आई नीड टू पुट हियर? फॉल्स, False negative. फॉल्स, Negative. फॉल्स नेगेटिव। तो यहाँ तो 0 और 1 The के लिए, down also. ओके, और यहाँ These four value will be true negative. ये ट्रू, हाँ ट्रू नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि 0 है तो ट्रू नेगेटिव हो गया। तो यहाँ 1 के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इफ 1 इज पॉजिटिव, -1, 0 इज False नेगेटिव, negative. तो -1 क्या होगा? इसको व्हाट नेम आई शुड गिव इट टू इट? Sir, false negative it will be. अच्छा, ये भी फॉल्स नेगेटिव ही होगा। Yes, sir. In like vertical line हाँ, will show the false negative. The अच्छा, complete. ओके, If there are more than three class, the same rule will apply. तो ये भी फॉल्स नेगेटिव ही एंट्री कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये आपका And ट्रू, rest will दिस be इज true 0 0 negative. ट्रू नेगेटिव ना, दिस इज 0 0 Yes, तो sir. ट्रू नेगेटिव। बाकी फिर यहाँ क्या होने वाला है? व्हाट इट विल बी? इट विल बी, No, only for like if we are considering -1, ओके, for that case, हाँ, इन दैट केस if you are considering -1 -1, yeah, -1 for only for this case. So this case, this value will be true positive, and these will be false positive, and the down one will be false negative, and these four will be true negative. But when we consider 0 and -1, then we have to do something different. Like ओके, तो yeah, ये एंट्रीज क्या होंगी अभी? व्हाट दीज एंट्रीज आर? अभी कुछ नहीं करना, नथिंग वी हैव टू डू। like if we are considering -1, then for that case we will say these are true negative for this one particularly. अच्छा, ठीक है, ओके, All the four, these four will be true negative for this one. ठीक है, तो यहाँ ये सब ट्रू नेगेटिव सर हो जाएगा। हाँ हाँ, एक्चुअली देर आर 3 क्लासेस, सो हम लोग ट्रू और पॉजिटिव करते हैं तो ये तो सिर्फ 2 क्लास के लिए। थर्ड जो है -1, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? दैट्स व्हाट शी इज सेइंग कि सर हमारा कंसिडरेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसिडरेशन कि अभी आप इफ यू आर हैविंग 3 क्लासेस तो 2 2 करके कंसिडर कर रहे हैं। दैट्स व्हाट शी सेड। एम आई राइट ह्यूमा? Yes, sir. क्योंकि वी आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब हमारे पास न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वाला मैटर तो नहीं था कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, दैट्स व्हाट दे टोल्ड। ओके, सर हम एक बार में एक ही को कंसीडर करेंगे, एंड हाँ, रेस्ट हम फिर मतलब उसी हिसाब से फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। जब हम 0 को कंसीडर करेंगे तो 0 0 विल बी ट्रू पॉजिटिव, द मिडिल वन विल बी ट्रू ओके, पॉजिटिव, 0 0 विल बी, 0 0 विल बी ट्रू पॉजिटिव। एंड 0 विल बी ट्रू पॉजिटिव, हाँ, दिस वन, तो 0 द 0 मिडिल वन। बिल्कुल सही है। तो अभी क्या And हुआ? in that case, the upper false positive there where we write, this will be like false negative, and the down one will also be false negative, and this middle line will be false positive, this side and this side, and the rest value will be true negative. There is something different, yeah. हाँ, हियर We have to consider one just. हाँ, तो बिल्कुल शी टोल्ड कि यहाँ पर पूरा डिफरेंट, तभी मैं अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था। ओके, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आया सर वो 3x3 का, फिर भी मैंने कोशिश करी टालने की, लेकिन वो आ गया दिमाग के अंदर। ओके, इट केम इनटू माय माइंड, तो मैंने सोचा चलो बना ही दो अब ये वाली। तो इसका जो वर्कआउट है ना, तो वो डिफरेंट होगा आपका जिससे आप दूसरों का करते हैं। ओके, हाउएवर, क्योंकि वी आर अवेलेबल विद पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, these are the two terms we are available. Okay, अब we need to map these two values with different classes, that's the point. अब how to do, अब वो कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन। अब जैसे क्या है, अभी मैंने -1 फॉर एग्जांपल, इफ आई टुक अ कॉम्बिनेशन ऑफ -1 0 एंड 0 -1, आई टुक द कॉम्बिनेशन, इसके हिसाब से एक मैट्रिक्स बना दिया। फिर अगला क्या है कि इफ -1 1 और मतलब -1 एंड 1 का कॉम्बिनेशन। ओके, तो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दीज टू ही है ना, उसी में ही आपको फॉल्स और ट्रू, और दिस इज हाउ यू नीड टू क्लासीफाई।
ओके, तो उस हिसाब से ये चलेगा। ऑलराइट, तो इसको बनाना पड़ेगा अलग हमारे पास। वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड विल डू दैट। ओके, तो अहेड आई एम अगेन सेइंग कि यहाँ पर अभी तो जो आप कंफ्यूजन में पड़ गए वो यही चीज थी कि यार पहले ये सीख लेते हैं अपन। ओके, तो बस व्हाट हैपेंस कि अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाए। यहाँ भी 1 0 करा, यहाँ पर भी 1 0, दैट्स इट। बस इतना ही समझ में आ जाए तो फिर ये रेस्ट तो फिलिंग हो जाएगी, क्योंकि 1 1 ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा, 0 0 ट्रू नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये वन, ये 0 एक्चुअल था, 0 होना था, लेकिन इसने 1 दे दिया, तो वी कॉल इट एज फॉल्स पॉजिटिव एंड हियर वी आर कॉलिंग इट एज फॉल्स नेगेटिव। बस अभी इतना समझ में आ जाए, फिर उसको 3 क्रॉस 3 और 5 क्रॉस 5 वहां पर भी लेकर जाए, मल्टी क्लासिफिकेशन इट डील्स विद दैट। वी हैव प्रिपेयर्ड द कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर देम। ओके, तो अभी इतना आपको ध्यान में रखे, नहीं तो दैट विल बी कंफ्यूजन। अब यहाँ पर भी टाइप एरर है, दिस इज टाइप 1 एरर। ओके, फॉल्स। अब ये इसने चेंज कर दिया, हम ठीक है लेट, हाँ ठीक है, नहीं करा हमने अपने अकॉर्डिंग टू दिस चेंज हो रहा था। ठीक है, तो इसको हटाइए। ओके, यहाँ से आप सीख जाइए, फॉल्स पॉजिटिव इज अबाउ ना, तो इट इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर। और ये फॉल्स नेगेटिव को मैं टाइप 2 एरर बोलता हूँ। तो अगेन देयर कुड बी क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड व्हाट इज टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर इज फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 एरर इज फॉल्स नेगेटिव। ओके, और इन जनरल भी यदि हम बात करते थे, वी वी हैव टॉक अबाउट कि यदि आपके पास क्लासेस है, 3 क्लासेस ही हैं। ओके, यदि मैं बनाऊं यहाँ, okay, we have seen the confusion matrix related to it कि -1 0 1 and -1 0 1। तो यदि -1 आपके पास कितने आ रहे हैं डेटा सेट में, हाउ मेनी एंट्रीज, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड -1 आ रहा है। अब रेस्ट, अच्छा एक्चुअल है 0, यदि उसके बावजूद भी -1 आ रहा है तो 0 एक्चुअल है एंड -1 इज प्रिडिक्टेड। तो भाई इन ऐसे कितनी एंट्रीज आ रही हैं वो यहां पर फिलअप करेंगे। एंड देन 1 है एक्चुअल, यू आर गेटिंग अगेन द रिजल्ट इज -1, तो फिर यहां पर उसको फिलअप करेंगे। ओके, तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू फिल अप अवर वैल्यूज। ओके, तो यहां क्या हुआ, योर एक्चुअल वैल्यू शुड हैव टू बी 0। यहां भी एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था। ये भी एक्चुअल, व्हाट इट इज, दिस इज एक्चुअल वैल्यू -1, तो एक्चुअल वैल्यू शुड हैव टू बी 0, बट यू रिजल्टेड इनटू -1। क्या करें, और फिर यहां से देखिए 0, अब जैसे मान के चले 0 है, सो योर एक्चुअल इज 0, प्रिडिक्टेड इज ऑल्सो 0। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड यदि 0 0 है, व्हाट इट इज, So true positive. हाँ ये भी ट्रू पॉजिटिव हो गया। अगेन ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड बोथ आर सेम हो गया, तो ट्रू पॉजिटिव, लेकिन ये अलग से सेपरेटली। अभी यदि मैं डील कर रहा हूँ -1 के साथ, देन इफ आई एम सेइंग कि -1 का भी आई एम वर्किंग विद, तो अभी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपको, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स गोइंग टू कंफ्यूज यू हाउ। ओके, तो इसके लिए आई वी विल चेक आउट लेटर। ओके, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओके सपोर्ट वेक्टर, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर के साथ ही बता देंगे। ओके, वैसे मेरा डिसीजन ट्री के साथ प्लान है, लेकिन देखते हैं आगे, इफ इट्स पॉसिबल तो मैं सपोर्ट वेक्टर के साथ इसको क्लियर कर दूं। कैलकुलेशन भी देख लेंगे, हाउ द कैलकुलेशंस आर। हालांकि कैलकुलेशंस में दिस इज व्हाट वी आर अवेलेबल। प्रिसीशन क्या होता है, प्रिसीशन, तो इन्हीं के बेसिस पर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रिसीशन कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी जितने पॉजिटिव पॉजिटिव्स है ना सबको उठा लो, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीशन, दैट जस्ट पिक एवरीथिंग रिलेटेड टू द पॉजिटिव। ओके, सो इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड एज प्रिसीशन। रिकॉल क्या होता है, व्हाट इज रिकॉल, दैट मींस टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन, बस इसको चेंज कर देना, फॉल्स पॉजिटिव की जगह फॉल्स नेगेटिव कर देना, तो वो रिकॉल हो जाएगा। और एफ1 स्कोर क्या होता है, दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीशन इन द रिकॉल, बस ये कर दीजिएगा। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज हार्मोनिक मीन फॉर्मूला, टू मल्टीप्लाई बाय प्रिसीशन इनटू रिकॉल अपॉन प्रिसीशन प्लस रिकॉल। हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीशन एंड रिकॉल इज कॉल्ड एज एफ1 स्कोर। और ये स्पेसिफिसिटी क्या होता है, इट इज ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव एक्चुअली, ट्रू नेगेटिव प्रेडिक्शंस, ये स्पेसिफिसिटी होता है। ओके,
तो ये आपका सिंपल है, एक बार बस आपको याद रखना है, खास करके ये तो चलो ठीक है, प्रिसीशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, मतलब ये तो पूछा ही जाएगा, इट विल बी आस्क्ड। तो इफ यू नो दीज टर्म्स ना, तो ये बता देगा कि आप कैसे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी। उसके बाद देन आई आस्क फॉर योर ROC AUC कर्व, दैट्स व्हाट, ये भी इवैल्यूएशन में था, वी नीड टू प्लॉट देम, सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आल्सो वी प्लॉट, ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्लॉट दिस ROC AUC भी। तो ये बाइनरी के लिए ही खास है, मतलब फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, तभी आप ये ROC AUC प्लॉट करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू चेक द परफॉर्मेंस फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी के अलावा करोगे तो एरर फेंक देगा वो, इट विल गिव यू, इट विल थ्रो एन एरर। फॉर बाइनरी के लिए कर रहे हैं हम, ओके, तो इट्स गोइंग टू शो द प्लॉट बिटवीन ट्रू पॉजिटिव रेट एंड द फॉल्स पॉजिटिव रेट, इन दोनों के बीच में द ग्राफ इज बिन प्लॉटेड, मतलब इट्स गोइंग टू क्रिएट अ डिसीजन बाउंड्री, ये बनाएगा। ओके, तो व्हाट इट इज एक्चुअली, व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव रेट? सो ट्रू पॉजिटिव रेट ये सेंसिटिविटी होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट, दैट मींस ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो यदि मैं कहूं कि ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव ऑल्सो, तो ये प्रिसीशन कहलाता है। लेकिन इफ यू रिमूव दिस फॉल्स पॉजिटिव एंड रिप्लेस इट विद फॉल्स नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव रेट, TPR। और फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है? तो ये फॉल्स के लिए जाएगा, दैट मीन्स फॉल्स पॉजिटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। जैसे वॉट एवर वी डिड हियर ना, जस्ट उसी की तरह वी नीड टू डू हियर, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो फॉल्स पॉजिटिव मीन्स FP अपॉन FP प्लस TN, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव रेट। एंड देन ट्रू नेगेटिव रेट क्या होगा? व्हाट इज ट्रू नेगेटिव रेट? तो भैया ट्रू नेगेटिव, बस ये ऐसी चीजें हैं, ट्रू नेगेटिव रेट। तो भाई ट्रू नेगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब ये इसके अपोजिट वाली जो चीज होती है ना, उसको इंक्लूड करो यहाँ पर, वट एवर बी द अपोजिट ऑफ ट्रू नेगेटिव ना, जस्ट इंक्लूड इट हियर, दैट विल बिकम फॉल्स पॉजिटिव। एंड व्हाट इज योर फॉल्स नेगेटिव रेट? तो चलो ठीक है, फॉल्स नेगेटिव रेट क्या हो जाएगा? FN अपॉन FN प्लस TP, ये हो जाएगा, दिस इज फॉल्स नेगेटिव रेट, ये हो जाएगा। So we are going to use these terms, then only this is called as ROC, receiver operating characteristics. तो इसी के अंदर वी आर गोइंग टू हैव योर AUC, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो अभी ये रुकते हैं, ओके, तो ये तो आप पढ़ ही लोगे, आई विल शेयर, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, AUC, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व यदि आप इंक्लूड कर रहे हो, तो दिस रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ये 0 से 1 के बीच में है AUC ROC। 0.5 मीन्स नो बेटर देन रैंडम गेसिंग, दैट इज देयर इज अ डायगोनल लाइन। 0.5 to 0.7 पुअर परफॉर्मेंस, 0.7 to 0.8 फेयर परफॉर्मेंस, 0.8 to 0.9 गुड परफॉर्मेंस, 0.9 to 0.1 एक्सलेंट। दिस इज योर AUC ROC कर्व वैल्यू, 0 से 1 के बीच में रेंज करता है, एंड दीज आर द इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स। Okay, so a random classifier ROC would be a straight diagonal line from this thing, एक diagonal line होगा। So the ROC is a good classifier will be higher, तो ये higher values होंगी। तो if ROC curve of a good classifier will be a higher, indicating a better performance। अब वो क्या, कैसे? एन आइडियल क्लासिफायर क्या होता है? व्हाट इज एन आइडियल क्लासिफायर? व्हाट शुड बी द वैल्यू? यू आर सेइंग दैट बिटवीन 0 to 1 you need to perform the plotting। so आइडियल क्या होता है? when your ROC curve reaches the टॉप लेफ्ट कॉर्नर, देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दिस। यदि टॉप लेफ्ट को 1 टच कर जाएगा, 1 होता है, TPR इक्वल टू 1 और फॉल्स पॉजिटिव रेट 0 हो जाएगा, देन यू आर गोइंग टू से दैट मींस दिस मॉडल इज परफेक्ट, perfect classification between the two, that means binary the classes। okay, and the area under ROC AUC quantifies that कितना, ये कितना एरिया बाउंड कर लेगा पूरा, दिस इज AUC। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है लाइन, और इसके वट एवर बी द एरिया और द रीजन इनसाइड इट, दैट इज कॉल्ड एज AUC, एरिया अंडर द कर्व। तो यहां मिलता है कर्व ROC से, in case of receiver operating characteristics I am going to get a curve, and whatever be the region or the area inside that curve is called as area under the curve, that is AUC। okay, तो यहाँ आपको you have been available, okay, how much the values are 0.5 and all these things are there, 0.5, 0.7,
Point 0.8, point 0.9. That's what we are available. So point 0.9 to point 0.1 per excellent performance, point 0.8, point 0.9 good, point 0.7 fair, point 0.5 to point 0.7 पुअर परफॉर्मेंस. तो यहाँ तो वो बोल ही रहा है कि कुछ भी नहीं है, नॉन बेटर. इससे नीचे तो कोई मतलब ही नहीं. That's a listing. That's a chart. So this is AUC, ROC, and other evaluation metrics for the logistic regression. Not only for logistic, not only for logistic. हाँ, वो ऊपर के R2 और AIC को छोड़ दो, तो rest of all is been evaluation metrics for every classifier, जिसमें कि आपको अभी 2x2 का बताया है confusion metrics. ओके, अब ये 3x3, दैट मीन्स अब मैं कहूँ n×n, उसका क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनने वाला है, इसका हम आर गोइंग टू सी अहेड. अभी मैं नहीं चाहता, क्योंकि यही याद रखना ही बहुत इशू हो जाता है. तो आई गेस अब तो आप बना भी लोगे, यू कैन डू इट दिस 2x2. तो सीधा 1 करा, 0 करा, 1 करा, 0 करा, वी सो कॉल्ड इट एज ट्रू पॉजिटिव. ओके, एंड वी कॉल्ड इट एज ट्रू नेगेटिव. ओके, इसको हम बोल देंगे फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव. पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव दे दिया इसने, और वो फॉल्स है क्योंकि जीरो होना चाहिए था. एंड हियर इसका अपोजिट कर दो, फॉल्स नेगेटिव. बस बात खत्म हुई, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हुई. बस दैट्स इट. यू नो हाउ टू कैलकुलेट देम, और फिर इनके बेसिस पर हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रिसिशन, रिकॉल तो एवरीथिंग. ये ट्रू नेगेटिव होगा. विच वन? ये हाँ ना, लास्ट में जो आपने लिखा. हाँ ट्रू नेगेटिव है ना, क्योंकि जीरो था और जीरो निकाल लिया, तो ये ट्रू हाँ नेगेटिव हाँ है ना. हाँ हाँ, ठीक है ठीक, सही है सही से. मैं वही बोल रहा हूँ बीच में, यू विल बी नोइंग, बट एक कंफ्यूजन करेगा ये. ओके, ओके, ये Yes. करेगा. तभी मैंने बोला कि आप ऐसा बना लो 1-0 एंड 1-0, यू डू दिस थिंग ना, एंड देन उसके बाद फिल अप करना. तो देन यू आर गोइंग टू, तब राइट राइट. अभी इसलिए मैं रुका हूँ 3x3 के लिए. ठीक है, इसलिए बिकॉज इसी को ही रटवा दूं पहले मैं आपको, देन वी विल हाँ सी, ठीक है सर, अभी सही है. है ना. इसलिए बिल्कुल भी अपन गड़बड़ नहीं करेंगे. तो ये आपका इवैल्यूएशन के लिए गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन. नाउ लेट मी पुट अप द कोड फॉर इट. ओके, तो मैं कोड पर आना चाहूंगा. लेट मी शो द कोडिंग पार्ट. How to implement logistic regression. Fine, here is your logistic regression code. Now again listen to me carefully. Logistic regression implementation, we are not going to bring directly from sklearn dot linear model import logistic regression. No, we are going to derive this logistic regression on the basis of what we have studied. तो क्या करा, import numpy as np, you very well know numerical python and linear algebra. क्योंकि maths करना, we need to do the maths now, so we have to use this thing. After that, what we need to do, we created a class, and this class is logistic regression. I created a Python class, logistic regression, and in this class I initialize one method, init method. Okay, you see, it's a simple, it's Python script. Okay, don't get confused. I believe that you guys know Python prior, then only you can implement all these tasks. So I created a class logistic regression, and there is a constructor. This is a constructor class initialize, because I need to initialize the object of this particular class. So whenever the object of this class is created, now this init method is called automatically. I hope you know about the concepts of classes and the objects. It will be done. So what here in case of init, now I am having a self argument. This is present in init self. Then I defined learning rate, and yesterday only you did studied about the learning rate also. I always request, whenever the recording come to you, na, you have to, I've seen that there are less students who just check out the recording. Only 3 to 4 views are. That's why I made it public. I want to check it, how many people are watching. But you guys are literally, for example, it will be lazy thing if you don't watch. Okay, so So what is the meaning of the learning rate 0.01? see, that's what I explained na yesterday. That's what I am telling. Learning rate is a step size. It's based upon gradient descent. That I need to find the global minima. That is what the learning rate is. I need to select one point in a plane, not in a plane, in your dimensional space, and then I need to go down to find the global minima. So how I'm going to go? How I'm going to down to find the global minima with some steps. Now I need to follow some steps to go down. So this is the way. Learning rate is the way how many steps you are going to take. That's called the learning rate.
So, as you said yesterday, learning rate, if it is smaller and smaller, that Hmm. is good, Good. but Yes. it is going to take more time. No, it will take. Okay. It will take. So, yeah. So, can we take a call based on the data? Because if the data is huge, learning rate should not be very small. If the data is very small, Hmm. then learning rate can be small, maybe 0.001 Okay. if the data is less. So, should we do that way? I mean, what is the good No, way to do it? no, no. We cannot use the 0.01 always. It's not 0.01 always. It's not been mentioned like technically that if your data is less, then you will be having more learning rate, and if your data is more, then you are going to have a less learning rate over it. It's not been mentioned. In general, it has been mentioned that your learning rate should be somehow what less in this particular way. That is 0.01, 0.001, and in few cases it is 0.0001 also in few cases. Okay. However, How the we chance, can? see the Yeah. chance, how we are going to put this thing, how we are going to. So Mm. yesterday also I told that in your analysis it has been given to you that what learning rate they want from us to for the calculations. Okay. So the thing is, are we going to achieve global minima or not? That's the concern. Are we going to have low error or not? That's a concern. So you can adjust the learning rate accordingly. Okay. And check out whether you are going to have lower errors or not. If you are getting low errors by zero point zero 0.01 only, that means you have achieved. So don't, if and not here the point is not concerned related to your data set. Many data points are there, less data points are there, no. Okay, they are only concerned that your errors are less or not. You reaching global minima or not? That's their concern. It's not concerned that low data and high data, no. Okay, so my learning But rate. technically, Hmm, hmm, if the data is not clear enough, huh, even we change lowest learning rate, hmm. then also we'll not get the global minimum, correct? See, if we increase your learning rate high, then there is a chance that the jump and we are going to reach somewhere else. That is the case. But Mhm. if your learning rate is low, your learning rate is there is a possible chances. Okay. See, Okay. see. Wait a minute. Uh, if I keep on talking and feed you most of the concepts quickly, what will be your learning rate? It will be low, no? You're Yeah. okay, you can't learn. But learning, that means the step which I'm going to take for this particular course, I am teaching you topic by topic. That means what my learning rate is. See, understand it in a different way. So I'm taking the topic step by step. Okay, this is the introduction, this is the problem definition, this is the algorithm, this is how you need to do. So you are going to learn everything. But if I say, okay, this is the introduction and just jump it towards the problem, jump it to solve the project, okay, you can't do that. So that's why this is the jump. How we are going point on a basis of your increments, down steps, then we are going to achieve our minima. Okay, because who knows where your global minima is present? Okay, where, who knows? This is the distribution of the data, but you have to find it. So you need to be patient in finding. So never we are going to have high learning rate. Your learning rate will be 0.01. Okay, if you are going to get the good results here, fine. If you're not getting, just change it to 0.01, then 0.001. I can't just say that okay, for this particular thing that you have to use 0.001 only, for this particular thing 0.01 only. No, according to the problem statement you will be given, this is the learning rate, apply it and get the result. Here also one more case, number of iteration. Now the question, okay, will come, sir, only 10,000 iterations are fair enough, or you need to do 10,000 iterations? What is good? See, I, for this particular derivation, I use these parameters on a random basis. Okay, just to check whether my results, whether my classification is better or not. So I use these values, these parameter values for my particular problem statement and just checking. Obviously if your data increases, you have to be much more, learning rate should be like 0.01. If your data increases, it should be 0.01. Go fair, go slow. Okay, so here my data set is less, so I just use 0.01. I think this learning rate will help me.
Okay, but in general it's not been mentioned, but we can understand from this particular case. All right, and if you want to let me first explain this particular code, and then we will change the learning rate and the number of iteration, then also we will compare the result what we are getting over the same data. Over the same data we will check the compare, we will compare it. Okay, so right now I'm taking the learning rate, that is the step size. One question came, what is learning rate, I explained. This is how we are going to reach the global minimum. These are the number of iterations, number of times your this code is going to work, number of iterations. And then I assign learning rate via learning rate and number of iterations via number of iterations. Okay, so these are the values which are present inside my method. So whatever be the learning rate iterations are now, I assigned it to both of them. Initially my weight and the bias are none, nothing, no weight and the bias, none. But I defined these two variables, these are none, no values. Next is your sigmoid function. You very well know sigmoid. So I defined my sigmoid function also. 1 upon 1 plus 1 plus np dot exponential minus z. So z is your these what parameters. Okay. So these theta x ultimately. Z is theta x. Yesterday class only we have seen z equal to theta x. That is coefficient and their variables. Okay. Then I need to fit my data into my logistic regression. So how to fit this thing? There's again a fit method in which I'm going to put x and y. Okay. So number of samples and number of features is equal to x dot shape. How many is the number of samples are there and now? So this is x dot shape is rows and columns. Rows and columns. So number of samples will be rows. Number of features will be column. I think this line is also clear. Okay, rows and columns. So x dot shape. Then what I need to do? Self dot weights equal to np dot 0. I assign all the weights 0 initially. Initially, I assigned every weight is 0 and my bias is also 0. My bias term beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3. तो initially क्या कर रहे हैं? You are assigning every weight is 0 and bias जो है वो beta naught वो भी 0. सब 0 करो. Okay, so all beta 1 beta 2 ये भी 0 and bias भी 0. सब 0 होगा. Okay, after So that. in this case, Z will be 0, no? If everything is 0. हाँ, everything will be Okay. 0. वही होगा. जब तो z भी 0 हो जाए. तो इनिशियली वेट यही करते हैं अपन. इनिशियली व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विद द डीप लर्निंग ऑल्सो कहीं भी तो हम यही करते हैं कि कुछ अब एक क्वेश्चन पहले मुझे प्रीवियस क्लासेस में सर वेट 0 कैसे हो सकता है सर, हाउ यू आर गिविंग वेट 0 एंड द बायस 0 सर कैसे हो सकता है, हुआ है ये हो तो रहा है. They did ask sir हम कभी वेट एंड बायस वी नेवर कीप 0 सर, वी एटलीस्ट गिव सम वैल्यू, कुछ तो वैल्यू देके चलते हैं, 0 नहीं करते, कुछ तो देके चलते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा कुछ देके चलें. ओके, वी कैन मेक दम 0. तो इनिशियली वेट और बायस दोनों 0 हैं, बोथ आर 0 टर्म्स. एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ग्रेडियंट डिसेंट. अब यहां से खेल शुरू, वी नीड टू अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट. तो ग्रेडियंट डिसेंट कैसा होगा, फॉर रेंज number of iterations and 1000 times we need to loop up. Number of iterations है 1000 तक चलना है, gradient descent निकालेंगे, minimum value we are going to calculate. तो क्या करना, लीनियर मॉडल क्या बोलता है, np डॉट x डॉट सेल्फ वेट्स प्लस सेल्फ बायस. तो ये जो आपके पैरामीटर है ना वो x, उसको मल्टीप्लाई करोगे वेट के साथ, यानी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये तुम्हें पता ही है डॉट प्रोडक्ट है तो होता है दोनों का, पता है ना, x और थीटा का डॉट प्रोडक्ट. Yes. Yes. और प्लस बायस कर देंगे उसमें उठा के, तो ये लीनियर मॉडल है. और ये वाई प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन तो सिग्मोइड्स आएंगे, ये है सिग्मोइड फंक्शन, ये आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है. सो ये प्रिडिक्शन ये देने वाला है, फ्रॉम हियर ओनली वी आर गोइंग टू गेट द प्रिडिक्शन. और सेल्फ डॉट सिग्मोइड में लीनियर मॉडल क्यों रखा, क्योंकि वही होगा ना 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा एक्स. तो वो थीटा एक्स क्या है, ये यही तो है वो लीनियर मॉडल, वही लीनियर इक्वेशन ही तो है ये पूरी. So that's what I need to calculate, and then I need to put up in my sigmoid function. Then these are the y predicted. अब gradient निकालना है. I need to calculate the gradient. तो gradient निकाला, weight और bias को adjust मारने. We need to adjust weight and the bias. So how to calculate the gradients? For calculation of the gradient, there is a formula dw equal to 1 upon number of samples multiplied by dot product of dot product of x का transpose and y predicted minus y. This is the way we are going to calculate the gradients for dw
वेट एडजस्ट ऐसे होंगे, ओके, और बायस ऐसे एडजस्ट होगा। वाई अगेन यहाँ भी वही है, वाई प्रेडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल, आई नीड टू टेक द सम ऑफ वाई प्रेडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स, ये आपका डी बी होगा, बायस। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द बायस टर्म। ओके, तो अब वाली बात हो गई कि हमने कॉस्ट फंक्शन, वी आर अवेलेबल विद द कॉस्ट फंक्शन एंड वी नीड टू डिफरेंशिएट दैट, है ना, कॉस्ट फंक्शन था एंड वी नीड टू डिफरेंशिएट विद डी बी एंड डी डब्ल्यू करा था कल की क्लास में, ऑलरेडी टोल्ड कि ऐसा आपका कॉस्ट फंक्शन समथिंग लाइक दैट। ओके, फिर उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ऑलराइट। तो उसका उसकी जगह यहाँ पर दे डिड एक्सप्लेन कि यार आप ये यूज करें फॉर योर डी डब्ल्यू एंड डी बी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेडियंट्स। तो weight, if you want to calculate, तो it's 1 upon number of samples multiplied by the dot product of x का transpose and your y predicted minus y actual। एक जगह मौजूद भी है ये नोट्स के अंदर, at one end it is present in the notes which I shared to you। okay, नहीं तो I will again check out, there's a query sir, we are not found some of the things, so I'll follow up this। सो इन नोट्स इट्स अवेलेबल कि आपका x का मल्टीप्लीकेशन है y प्रेडिक्टेड माइनस y के साथ, देन इट्स गोइंग टू बी द वेट, और आई एम गोइंग टू टेक द सम ऑफ y प्रेडिक्टेड माइनस y एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स, तो ये आपका बायस है, दिस इज अ बायस टर्म। और अपडेट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग, मतलब ये अपडेट आप, आई होप यू अंडरस्टूड, वेट इक्वल टू वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू इनटू डी डब्ल्यू एंड बायस इक्वल टू, क्योंकि माइनस साइन है देखिएगा, ये माइनस इक्वल टू है ये, ओके, तो इट मीन्स बायस इक्वल टू बायस माइनस लर्निंग रेट इनटू डीबी, ऐसा करके अपडेट करना। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेट एंड द बायस। तो 1000 इटरेशन तक चलेगा, ये पूरे अपडेशन होंगे। तो ये यहाँ से मॉडल ट्रेन हो गया, बस ये ट्रेन हो गया मॉडल, बस यही होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर। ये होता है ना, आप करते हैं ना फिट, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन फिट करते हो, तो ये हियर दिस इज द वे वेयर मॉडल गेट ट्रेन्ड, ओके, ये होता है। एंड द थिंग इज लेट मी शेयर यू अगेन अ स्क्रीन, ओके, तो वहां पर मैं आपको बता दूं, नोट्स, इन नोट्स ना वी आर अवेलेबल, I've already put this thing into the notes, ये रहा। And yesterday also it came up in the lecture कि steps to be followed for the gradient descent is to obtain the lower cost function, ये आपका sigmoid function था, okay, and you are available with this equation, okay, ये करा। और फिर क्या बोला गया, यू आर गोइंग टू हैव अ लर्निंग रेट दैट इज टेकन वेरी स्मॉल, समथिंग बिटवीन दिस थिंग टू दिस थिंग, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना लर्निंग रेट ले रहे हैं, 0.01, 0.001, 0.0001, इतना ले सकते हैं, इससे और नीचे मत जाना वरना फिर और डिले हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है, तो इतना ले सकते हैं। तो लर्निंग रेट ये आपका ट्यूनिंग पैरामीटर होता है, स्टेप साइज है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इट्स स्टेप साइज। अब ये कह रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है कॉस्ट फंक्शन का, तो कैलकुलेशन ये ऐसी होती है, डेल बाय डेल्टा जे थीटा जे इज इक्वल टू एच थीटा माइनस, तो ये है प्रिडिक्टेड, ये है एक्चुअल, और ये है एक्स आई जे, ओके, एक्स आई जे। तो ये जो करा गया है यही आपका वो वेट का एडजस्टमेंट्स है, दैट्स व्हाट दे टोल्ड इन द वेट एडजस्टमेंट्स, और ये बाद में लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है, थीटा जे इक्वल टू थीटा जे माइनस लर्निंग रेट एंड वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल, और ये एक्स जे, यही है वेट का एडजस्टमेंट्स। तो द पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट फॉर द कॉस्ट फंक्शन इज टेकन आफ्टर कैलकुलेशन द इक्वेशन अचीव्ड विल बी, तो आफ्टर कैलकुलेशन, तो आप जब अभी हमने पूरा डेरिवेशन करा नहीं था, मैंने आपको बोला था देखो भाई ये थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन, हाँ फिर भी इट्स अप टू यू, यदि आप हैंड आउट मार लो तो, उसको हैंड आउट्स कर लो तो, ओके, दैट कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा जे, तो ये कॉस्ट फंक्शन इक्वेशन यू वेरी वेल नो, -1 अपॉन m समीशन ऑफ y log hx प्लस प्लस 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस एच एक्स, तो ये आपको जे थीटा यू वेरी वेल नो। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा आप, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए फ्रॉम योर साइड, यू आर गोइंग टू अचीव दिस थिंग।
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली वो उसने वेट लिखा, क्योंकि आप फिर मुझसे पूछोगे सर ये कैसे आ गया, ये वेट डी डब्ल्यू और ये कहाँ से आ गया, तो ये आप जिसने सॉल्व करा ना, आपको दिख रहा होगा कि यही है मल्टीप्लीकेशन एक्स का और ये वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल का। ओके, तो वही उसने यहाँ लिखा है डी डब्ल्यू और समथिंग लाइक दैट, वो डी डी भी लिख रहा है। ओके, तो ये टर्म्स हैं। ओके, इट्स अवेलेबल इन द नोट्स। ठीक है, बात की बात है। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी आई डिड एक्सप्लेन, सो यू नीड टू वर्क आउट समथिंग ओवर दैट, हाउ टू डिफरेंशिएट और हाउ टू परफॉर्म द पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो लेट्स अगेन टॉक अबाउट द कोड। तो ये होता है इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बस। उसके बाद तो कुछ नहीं है। प्रिडिक्शन, इफ यू वांट टू परफॉर्म द प्रिडिक्शन, तो जो एक्स टेस्ट बचा हुआ है, दैट मीन्स वो एक्स की वैल्यूज हैं, उसको भी जस्ट पुट अप, कैलकुलेट द लीनियर मॉडल, वाई प्रिडिक्टेड इक्वल टू ये सिग्मोइड के अंदर वी आर गोइंग टू पुट, तो ये वाई प्रिडिक्शंस आ जाएंगे। और वाई प्रिडिक्टेड क्लासेस, अब क्लासेस में ये देखिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड है, व्हाट इट इज सेइंग, 1 if I is greater than 0.5, यानी if your predicted values are more than 0.5, then your result is 1, else your result is 0, else 0 for I in y underscore predicted, ये बोल दिया उसने। तो इस तरीके से आप मॉडल करते हो ना, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, तो ये प्रिडिक्शन का कोड है, तो वहां यही होता है। सो प्रीवियसली हम तो सीधे मॉडल डॉट फिट एंड मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, दिस इज व्हाट वी डू, बट हियर इज अ प्रॉपर कोड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड अ मॉडल। तो यू आर गोइंग टू पुट ऑल द फीचर्स देयर इनसाइड द मॉडल, यहाँ पर वी डिड पुट, है ना, एंड देन वो उसने प्रिडिक्शंस करे, ग्रेडियंट्स निकाला, ओके, एंड देन इट गिव यू द रिजल्ट्स। तो इफ फॉर एग्जांपल दिस इज योर एक्स ट्रेन, एक अरे लिया आपने, एंड दिस इज योर वाई ट्रेन, यानी कि जब 2 3 इज अ कॉम्बिनेशन योर रिजल्ट वाज 0, when 4 2 was a combination result was 0, 1 7 was the combination result was 1, 6 2 per 1, and 7 3 per 1। ओके, ये ऐसा रिजल्ट आ रहा, सो दिस इज अ 2D अरे, ये 2D अरे और ये 1D अरे है, सो ये आउटपुट है, दिस आर द आउटपुट एंड दीज आर द फीचर्स। तो इनको जब मैं पुट करूंगा इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके, और ये करने के बाद मुझे मेरा मॉडल फिट करके मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, ट्रेन करने के बाद मैंने एक्स टेस्ट का डेटा डाल दिया 1 5 और 5 1 पर क्या आने वाला है, तो उसने मुझे प्रिडिक्शन दे दिया 1 and 0, ये दे दिया उसने। और यहाँ आप देखेंगे कि लर्निंग रेट, अब देखिए आई कैन एडजस्ट फ्रॉम माई एंड 0.1 करा, आई कैन हैव 0.01, लेकिन यहाँ से 0.1 गया तो सही, बट इन एक्चुअल आई एम हैविंग 0.01। तो इनिशियली 0.01 था, ओके, इनिशियली 0.01 बाय डिफॉल्ट है, लेकिन यदि आप दे दोगे खुद से, इफ यू गिव फ्रॉम योर एंड, तो वो वाली वैल्यू पिकअप कर लेगा, इट विल पिक अप योर वैल्यू। Initially it is 0.01, but if you give 0.1, then it's going to pick up that particular value, so my learning rate will be 0.1। Okay, I'm not sure what is the prediction 10 means. see, these are binary values, no, 0 and 1, 1 Yeah, stands yeah. for positive, 0 stands for negative, that's it. It's a binary Okay. classification. This is a binary class, that means your input is 2 3, output is 0. Oh, If your okay. input is 4 2, output is 0. If your input is 1 7, output is 1. So just These are the output. prediction It's include predicting. of the data 1 5 or 5 1. So you know we have made this table. These are the features. Here are the values for the features. But in this, we did not check the accuracy. And in this thing, we haven't checked the accuracy. We can check the accuracy also for this particular model. One more question from Scikit-learn, because you just show us about the Huh? stretch logistic regression, how it's work, the code. Hmm. I mean, we need to use like these types of scripts like from the base, or why we use like from the Scikit-learn from Scikit-learn See, this package. particular file, na, in scikit-learn, na, this particular file is present. What you are doing, na, it's already present in scikit-learn. Yeah. So, I mean, is there anything that we want to know particularly that we want to figure out from the logistic regression? If we want to change any code, then gives us like different results. Yes, you can from change the- it. Yes, you can change this algorithm. You can do it. Okay. This is the algorithm of logistic regression which we have implemented. You can do a Yeah. change over it.
Yes, you can do that, and then you can have your own algorithm. So in scikit-learn, this code is already present for the logistic regression. Every code which we access from scikit-learn, it's already present there. Okay, so there are many algorithms present in machine learning, Yeah, it's but actually very good understanding about how the, I mean, algorithm works, because works. we are not thinking about Uh, his best side, those who develop the code, who just use the package. yeah, that you see, you are already available package. You use, but how it works, that is not Yeah, yeah. available anywhere. That's what I am explaining in this lecture. No? That's what I explained. That what are the parameters? There are question. What are the parameters? Okay, and also uh, learning rate, number of iterations. These are, you can check the scikit-learn library. There for logistic regression. It will also tell you what are the hyperparameters which are available in logistic regression. We have to learn those also. It doesn't mean, see, everything is not dependent upon me. There's something dependent upon you guys also. So what, for example, linear regression, you study linear regression, you need to check, you need to first you need to do the project. Okay, with me we are going to do this. Okay, apart from that, you need to check in case of linear regression, you need to check on scikit-learn library. Okay, scikit-learn, you need to check there, check this website for linear regression. What are the parameters available? What are their default values? At least you should know. Okay. So I am telling you, I am teaching you. My much more concern is what is that algorithm? What are the parameters and where to use? What are the assumptions? What are the advantage and what are disadvantage? Everything I need to explain, and complete mathematical. So we in machine learning we are doing the complete maths, and then we are implementing that thing over the Python. That's what my deal is. Also, it's your responsibility to explore, to check the websites. Okay, official website. So this is code available in scikit-learn library, and we are using it. We can check out the accuracy also. For that, there is again, for accuracy you can use the library which is available. Okay, and accuracy score is something from sklearn.metrics. You can use from sklearn.metrics, so you can have an accuracy score. So let me put that thing also, because the question came, sir, kindly tell us about the accuracy also. Yes, so, sir, would you, I mean, show only logistic regression code or any other machine learning code you will be sure about how it works? Yes, that's how it Like, works. No, that's how it works. no, I mean, you showed us about Hmm. logistic regression Hmm. code. I How mean, it works, yes, that's what I showed. yeah, Yeah. do you have any plan to next lectures to show us like random forest? Yes, Uh, yes, I okay. will implement. That's what I told. We will Okay. first learn the complete maths behind it. We see the example, and then we are going to implement on Python. I'm not going to use directly import this thing from that. No, we are going to learn how they came up. Okay. Yes. So every algorithm, every means what are the special that means much more highlighted algorithm. Linear regression we have seen, ridge lasso we have seen. One thing I put for you, that is elastic net. You need to explore that thing. Second, I started with logistic regression. I explained this thing. Then I will switch to support vector machine. So in support vector machine, we are going to check out both regression and classification, because SVM is used for both the cases. Now, rest of the algorithm will be used for both regression class, decision tree also regression classification, random forest also regression classification. So we are going to explore all these things. Yeah. Particularly, sir, it's very important to understand about the assumption of the Ah, every algorithm, because when you just mandatory. run the model, like some for the base of the model assumption or algorithm assumption, different model give like different importance of the features. Yes, So it's totally understand about the how every model works or every obviously. algorithm if works. you if Yeah, you if you don't know the assumptions, you are completely failed in using that particular model. If you yeah, like only to use like, assumption, yeah, assumption will let you know that what you are going to do over the data. Okay, else if yeah, you don't improve our data accordingly, then if you fit it into the model, no, wrong results. Okay, yeah. so I here, mean, everybody can use like algorithm. Oh, this algorithm, and then get that result. But maybe it's for him or her difficult to explain what's actually going. yes. Yeah. Okay, so we need to just know about each and every algorithm, every assumptions, what are the parameters, so why prediction and why.
y predicted and y test. If I going to check out the accuracy score, y test is not defined here kya? This is x test now. I put the x test and y predicted. Okay, y test is not defined here in this particular data. Okay, we are having x train, y train, then we are having x test. We don't have any y test. Okay, here. So, anyways, this is the way to calculate the accuracy score. If you are available with the y test, we can check with the predictions, and then it will let you know the accuracy. Anyways, that was a question asked, so I put in the code. Okay, and this is the way you can create the plot. You can plot the decision boundary and the data points. So here I'm taking x train data points. That means where the y is 0, and that means y train 0, and your y train y train 1, and then here again y train 1 and y train 0. That means I'm going to create a decision boundary of the data points. Okay, so what are the data points that we are taking? Whatever be the data points we are considering here, why that means this is class 0 and this is class 1 for both the classes. Okay, we are going to plot the points. Okay, boundary you can set from your side. What should be x min, what should be x max, what should be y min, what should be y max. Okay, and this is the grid which we created. Grid means that complete plot. That means the graph paper like thing with a distance of point 1 point 1. Okay, so for example 0 0.1, 0 0.2, 0 0.3, 0 0.4, 0 0.5 till so on. Okay, so here I'm taking minimum and the maximum values, how much you can put it for your creating the axis, and here is what your the distances between that particular thing. Okay, and all these stuff has been present in your matplotlib. I've already given you the code example, so there you are going to see what is ravel. Okay, what is mesh grid, everything in numpy, everything has been available, all the codes. You need to practice those codes, don't take them lightly. You need to practice those codes. This is contour, how to draw a contour. Okay, and then this is the final diagram for the logistic regression. It created a boundary, this is the boundary, and separated the classes. This is red and this is blue. It's separated and a boundary is created. You can see that there is a perfect classification by our logistic regression. Okay, so it's mandatory that you have to learn. Okay, and you need to do the practice of the codes. Okay, so here we plotted the decision boundary and the data points. Okay, we are doing this particular task. That means there is a line that creates a scatter plot first. Okay, so in this particular case we have seen that in this particular section we are going to draw a scatter plot, okay, of the training data points for by the two colors for each class, 0 and 1. Okay, so I'm defining the points. Okay, defining the points with for class 0 and the class 1, class 0 with blue and class 1 with the red. You have seen blue and red. So I'm drawing the points only, plt dot scatter. So I'm just plotting your training points. Okay, what is x train, y train? Okay, x train, y train, this thing, and then again for your class 1 and class 0 both. After that I just set the axis and then I plotted. That's it. This is the implementation and the plotting part of your logistic regression. Okay, so yes, let me stop the recording.